Proteins. Proteins are essential nutrients for the human body. They are one of the building block of the body tissues and can also serve as a good source of fuel, as they can produce 4 kilocalorie or 17 kilojoule per gram of protein, which is almost equal to the carbohydrate. डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस इम्पोर्टेंट चैप्टर प्रोटीन केमिस्ट्री को स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रोटीन केमिस्ट्री के अंदर आप देखेंगे द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स विच वी यूज इन आवर डेली लाइफ। फॉर एग्जांपल एग एल्बुमिन, मीट, मिल्क प्रोटीन, इसके अंदर कैसीन होगी। सो दीज प्रोटीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू आवर लाइफ बिकॉज ये हमें गुड सोर्स ऑफ एनर्जी देते हैं, हमारी बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी है, मसल्स को प्रोड्यूस करते हैं। प्रोटीन्स आर बेसिकली made up of small bead-like structures which are known as amino acids, and they are synthesized in the nucleus by the process of translation. You can see here this huge body is RNA polymerase, which is reading the messenger RNA, and that after reading by the process of translation it will produce a specific type of protein. That's why we say that almost everything that occurs in the cell involves one or more proteins, and protein provides structural, catalyze cellular reactions, and carry out a myriad of other tasks in our body. So in this chapter हम प्रोटीन केमिस्ट्री को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको सिर्फ एक आउटलाइन दूंगा कि इस चैप्टर के अंदर हम चैप्टर को किस तरह 2 मेन ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। दैट इज प्रोटीन केमिस्ट्री, जो हम इस पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। वी विल स्टडी अबाउट पार्शियली एज अ अमाइनो एसिड केमिस्ट्री, जो हम इस पोर्शन के अंदर स्टडी करेंगे, एंड देन इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द प्रोटीन केमिस्ट्री। इसकी केमिस्ट्री क्या है? सो अमाइनो एसिड केमिस्ट्री के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड, क्लासिफिकेशन, प्रॉपर्टीज, नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स यूजफुल एज ड्रग्स, and in the protein chemistry in the next lecture we'll study about the structure of the protein. In this portion we will study about the primary, secondary, tertiary and quaternary structure, and then in the second portion we will study about the primary structure को determine किस तरह किया जा सकता है, that is what type of and how many number of amino acids present in any protein. We will study about the in detail properties of the amino acids, denaturation of the proteins, biological important peptides as well. So first of all, I would like to define what are proteins. Basically, they are the most abundant organic molecules of the living system. So if you go inside the cell, you will find number of different proteins. For example, some of the structural proteins, some of the enzymes. So proteins are present in every part of the cell and constitute almost 50% of the cellular dry weight. So why the huge amount of protein is there? Because they have to perform some specific type of functions. For example, some of the proteins are structural in nature. There are proteins which are storage and transport, cellular communication, movement, and defensive against foreign substances. And some of the proteins are playing an extremely important role of enzymes, that they can speed up a specific chemical reaction. So now we study about the first part of this chapter, that is amino acid chemistry. In this amino acid chemistry, we will study about first of all structure of amino acid. In order to understand the simple structure of the amino acid, just see this carbon, which is tetravalent, that it has a 4 valency. It can bind with hydrogen at one side. On the other hand, it can bind with a carboxylic group. Then you can have a side chain, R chain, which can be a variety of different side chains can be there. For example, sulfur, hydroxyl group, methane, methene, methyl, benzene, tryptophan. Different type of amino acids बनेंगे R chain different होने से, और every amino acid के अंदर एक NH2 group यहाँ पर present होगा. So these 3 moieties are common in every amino acid. That is, हर amino acid के अंदर एक carboxylic group होगा, एक हाइड्रोजन होगा, एक हमारे पास अमाइनो ग्रुप होगा, और जो सेंटर में ये कार्बन है, इस कार्बन को हम कहेंगे अल्फा कार्बन या कायरल कार्बन. सो कोई भी अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से डिफरेंट क्यों होगा? इट इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस आर चेन. सो वी विल से दैट देयर आर ऑलमोस्ट 300 different type of amino acids have been reported till date, but all of these amino acids are not protein forming. There are only 20 amino acids which are known as protein forming amino acids. They are also termed as standard amino acids. Then there are some of the amino acids
which have side chain R is different for amino acids. So amino group, carboxylic group, and hydrogen group are similar in every amino acid, while the R chain is different for every amino acid. Most of the amino acid exist in ionized form in the biological system. So if ionized form के अंदर biological system से क्या मुराद है कि amino acid circulation के अंदर, amino acid gut के अंदर, dissolved form के अंदर जब भी होगा, it will be present in positive and negative ions की form में होगा. Carboxylic group के ऊपर negative, ammonia group के ऊपर positive charge होगा. सो अमाइनो एसिड केमिस्ट्री के अंदर डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे. देयर आर 4 डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम्स. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को छोड़िएगा मत. जस्ट पे मी 20, 25, 30 minutes and you will learn all the amino acids according to different classification systems, because हमने इसके अंदर important mnemonics बनाए हैं, उनको सुन के आप important amino acids को याद कर सकते हैं easily. So the 4 classification systems are classification system based on structure, classification system based on polarity, classification system based on nutritional value and on the metabolic fate. That is structure की base पर कौन कौन सी classes होंगी? There are 6-7 classes. Aliphatic side chain कौन सा होगा? Hydroxyl group containing amino acid कौन से हैं? ये कौन से हैं जिसमें R chain में aliphatic होगा, R के अंदर hydroxyl group होगा, R के अंदर sulfur group होगा, आर के अंदर अगर कोई एसिडिक ग्रुप है, बेसिक ग्रुप है या एरोमेटिक अमीनो एसिड्स हैं, such type of amino acids are known as structure की बेस पर classification system या amino acids. So these are some of the amino acids which are based on the structural classification. Polarity के बेस पर अगर हम आए तो हम कहेंगे नॉन पोलर अमीनो एसिड्स, पोलर अमीनो एसिड्स. अब नॉन पोलर पोलर में भी आर ग्रुप को हम देखें तो आर ग्रुप में पॉजिटिव चेन के साथ और आर ग्रुप नेगेटिव होगा तो कौन से होंगे? Similarly, nutritional value में essential, non-essential और metabolic fate में that is amino acid फ्यूचर में जाकर मेटाबोलाइज होगा तो ग्लूकोज देगा, कीटोन बॉडीज देगा या दोनों देगा. सो वी कैन डिवाइड द मेटाबॉलिक फेट के ऊपर सारे अमीनो एसिड्स को एज अ ग्लाइकोजेनिक, कीटोजेनिक एंड ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स. सो वन बाय वन अब हम स्ट्रक्चर की बेस पर देखते हैं. बहुत सिंपल क्लासिफिकेशन है और आप इजीली याद कर लेंगे विद सम फनी न्यूमोनिक्स. क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर. सबसे पहले आप इसके लिए एलिफैटिक साइड चेन के लिए एक वर्ड याद कर लें, विलेज. पाकिस्तानी villages are very beautiful. So village से क्या बनेगा? V stands for valine, I stands for isoleucine, L stands for leucine, A stands for alanine and G stands for lysine. Similarly hydroxyl group के STY, पाकिस्तान का जो हमारे पास नेटवर्क सिस्टम है उसको हम STY सिस्टम कहते हैं. serine, threonine and tyrosine. Y is single letter abbreviation for tyrosine. And CM, some of the funny CM in Pakistan, KPK पंजाब CM और सिंध के अंदर जो CM है वो सल्फर containing है and they are cysteine and methionine. So acidic amino acids में हमारे पास acid because produce arg, that is fire. So हमने इसको arg word use किया है. A stands for aspartate, A stands for aspargine, glutamate and glutamine. Similarly basic amino acids में history of Argentina was lie, that is history mean HI histidine, ARG stands for arginine and L stands for lysine. You can remember these classification based on structure easily. And then aromatic amino acid is ये telephonic lines होती हैं HTTP और इसमें हम कहते हैं histidine, tryptophan, tyrosine and phenylalanine. इम्यूनो एसिड्स में हमारे पास प्रोलीन है. सेकंड क्लासिफिकेशन सिस्टम जो हमारे पास बेस्ड ऑन पोलैरिटी है, नॉन पोलर अमीनो एसिड्स में एक बहुत फनी किस्म की न्यूमोनिक मैंने बनाई है और आई होप दैट आफ्टर दिस लेक्चर आई विल हैव अ कंफर्टेबल टाइम एट होम. दैट इज इन लैम्प, दैट इज व्हेन यू ऑन द लैम्प your wife appears like a very gorilla. That LAMP stands for leucine, alanine, M stands for methionine, P stands for proline, and W stands for, this is a single letter abbreviation for the tryptophan. I stands for isoleucine, F stands for phenylalanine, and V stands for valine, and G stands for lysine. Similarly polar non charge amino acids कौन से हैं? हम कहते हैं कि TCS जो है इसके ऊपर एक टैग लगाएं और इस TCS को immediately भेजें. So हम कहते हैं TCS the tag item. So TCS stands for tyrosine, cysteine and serine, and tag stands for threonine, aspartate and glutamate. Similarly positive charge R के साथ कौन से? Exam hall, which is a scary place for the students, and hall stands for histidine, arginine, lysine.
सिमिलरली पोलर अमीनो एसिड्स विद नेगेटिव आर चेन कौन से हैं? हम कहते हैं एजी, बात सुनिएगा, हर हस्बैंड को बहुत दफा एजी सुनना पड़ता है। ए स्टैंड्स फॉर एस्पार्टेट एंड जी स्टैंड्स फॉर ग्लूटामेट। नेक्स्ट अमीनो एसिड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द न्यूट्रिशनल वैल्यू, दैट इज इसेंशियल नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स। हम कहते हैं कि पीटीवी के अंदर अगर आप जाए, पाकिस्तान टेलीविजन, उसके अंदर एक हॉल होगा जिसके अंदर एक रेड बल्ब होगा, वो टाइम हॉल होता है। यू हैव टू सी द रेड बल्ब एंड व्हेन इट इज ऑन तो आपका शो स्टार्ट हो जाता है। दैट हॉल इज नोन एज पीटीवी टाइम हॉल। सो पीटीवी फिनालिन, थ्रियोसिन, थ्रियोनिन, वेलिन, टायरोसिन, आइसोल्यूसिन, मेथियोनिन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लियोसिन, लियोसिन, लाइसिन एंड लियोसिन। अगर आप इसको याद कर लें, ये अमीनो एसिड्स आपको इजीली याद हो जाएंगे। और अगर आप ये अमीनो एसिड याद कर लेते हैं तो नेक्स्ट ऑफ द नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, इसके अलावा सारे नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स होंगे। सो अगर आपको कहा जाए सिलेक्ट द इसेंशियल अमीनो एसिड और सारे नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड दिए हुए हों और इसके अंदर कोई ये वाला अमीनो एसिड दिया हुआ हो, तो आपको इजीली याद होगा पीटीवी टाइम हॉल के अंदर कौन कौन से अमीनो एसिड्स होंगे। Next classification and the last classification system based on nutritional value. Ketogenic amino acid double L, that is lysine, leucine, बहन भाई हैं। ग्लाइकोजेनिक कीटोजेनिक अमीनो एसिड्स कौन से हैं? टायरोसिन, ट्रिप्टोफेन, फिनालिन, आइसोलियोसिन, टीटीपी पाकिस्तान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, और टायरोसिन, ट्रिप्टोफेन, फिनालिन, आइसोलियोसिन एंड ग्लाइकोजेनिक अमीनो एसिड, रेस्ट ऑफ द सारे अमीनो एसिड्स ग्लाइकोजेनिक अमीनो एसिड्स होंगे, ग्लूकोज फार्मिंग होंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ द अमीनो एसिड्स में आए तो हमने सारी अमीनो एसिड की प्रॉपर्टीज को टू मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया। एक हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर अगर हम आए तो हम कहते हैं कि अमीनो एसिड्स वेदर दे आर सॉल्युबल, ऑल द अमीनो एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर डिसॉल्व नहीं होते, मेल्टिंग पॉइंट 200 प्लस में होता है। इनका टेस्ट स्वीट हो सकता है, बिटर इफ दे आर स्वीट, ग्लाइसिन, एलिन, वेलिन, बिटर है तो आर्जिनिन, लाइसिन, और मोनोसोडियम ग्लूकोजोनेट जो है हमारे पास एमएसजी या चाइनीज साल्ट जिसे हम कहते हैं, ये रेस्टोरेंट्स के अंदर एक्सटेंसिवली यूज होता है। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में आए तो एक्सेप्ट ग्लाइसिन विच इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, ऑल द अदर अमीनो एसिड्स शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म एंड दे शो ऑप्टिकल आइसोमर्स एज वेल। एम्फोलाइट्स अमीनो एसिड्स वो होते हैं या सारे अमीनो एसिड्स एम्फोलाइट्स होते हैं बिकॉज दे कैन डोनेट प्रोटॉन और दे कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन एज वेल। So at a position when they are not having any positive or negative charge, such type of ions are known as Zwitter ions. So amino acids at neutral pH, they behave as a Zwitter ion, and such type of pH is known as isoelectric pH. फिजिकल प्रॉपर्टीज में डियर स्टूडेंट्स अगर हम आए तो हम कहते हैं सॉल्ट फॉर्मेशन। अमीनो एसिड्स कैन फॉर्म सॉल्ट विद सोडियम, विद एसिटाइल ग्रुप और विद अल्कोहल्स, ये रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो सकती है, दैट इज डीकार्बोक्सिलेशन हो सकती है और कॉरस्पॉन्डिंग अमाइंस बनाएंगे। इसी तरह रिएक्शंस विद अमोनिया अगर हम कहें तो ये अमाइड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लूटामिक एसिड अगर अमोनिया रिमूव कर दे तो ये ग्लूटामीन बना देगा, और इसी तरह एस्पार्जीन जो है ये भी अमोनिया रिमूव कर दे तो एस्पार्टेट बना देगा। सिमिलरली रिएक्शंस ड्यू टू अमाइनो ग्रुप जो है अमाइनो ग्रुप प्लस HCl, रिएक्ट HCl इसके साथ करे तो साल्ट बनाता है, एंड निन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये पर्पल या पिंक कलर कॉम्प्लेक्स बनाकर निन हाइड्रोजन के लिए स्पेसिफिक टेस्ट पॉजिटिव या नेगेटिव करेगा। One of the important property of the amino acid that it undergo transamination. Transamination क्या होती है कि एक अमोनिया एक अमीनो एसिड से उठ के दूसरे किसी अमीनो एसिड के साथ अटैच हो जाए, कीटो एसिड के साथ अटैच हो जाए। फॉर एग्जांपल दिस इज वन ऑफ द अमीनो एसिड, इसके साथ ये अमोनिया है, यहाँ पर एक कीटो एसिड है, ये अमोनिया इसके साथ आकर अटैच हो जाए तो एक न्यू अमीनो एसिड बन जाएगा और ये कीटो एसिड यहाँ पर बन जाएगा। ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन में अगर हम आए डियर स्टूडेंट्स तो हम कहेंगे ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन is in fact the free ammonia liberation. This free ammonia will taken up by the liver, जो यूरिया में कन्वर्ट, यूरिया साइकिल में यूरिया में कन्वर्ट होगा, it will be excreted out. Amino acid uses as drugs. There are three very important amino acids which can be used as drugs. Number one, D-pencilmine, that is D-methylglycine, which can chelate copper. ये कॉपर बॉडी के अंदर क्यों एक्यूमुलेट होता है? एक डिजीज है जिसको हम कहते हैं विल्सन डिजीज। विल्सन डिजीज के रिजल्ट में कॉपर जो है वो बॉडी में एक्यूमुलेट होगा और इसमें हाइपर एक्सटेंसिबल स्किन हो जाएगी, आपके रेटिना के आसपास एक ब्लू कलर प्रोड्यूस होगा, मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है, विल्सन डिजीज काज होगा, कॉपर एक्यूमुलेट होगा। उसको चिलेट करने के लिए जो अमीनो एसिड यूज किया जाता है दैट इज पेंसिलमाइन। Similarly, N-acetylcysteine is also a very important amino acid which is used as a drug or in the treatment of the cystic fibrosis.
gabapentin is used as anticonvulsant. और नॉन प्रोटीन फॉर्मिंग अमाइनो एसिड्स में कुछ प्रोटीन्स कुछ ऐसे अमाइनो एसिड हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जैसे सैम है। सेकंड ईयर में जाकर प्रोटीन केमिस्ट्री में आप देखेंगे सैम इज एस एडिनोसाइल मैथ्योनिन, मैथ्योनिन डोनर ग्रुप है। ये एक ऐसा नॉन प्रोटीन फॉर्मिंग अमाइनो एसिड है जो इजीली मैथ्योनिन मिथाइल ग्रुप डोनेट कर सकता है। सिमिलरली होमोसिस्टीन इज नाउअडे लैब के अंदर चेक किया जाता है, विच इज अ रिस्क फैक्टर फॉर द कॉर्नरी हार्ट डिजीज। एजासीरीन इज एंटी कैंसरस ड्रग के तौर पर इस्तेमाल होता है। साइक्लोसीरीन एज एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग के तौर पर इस्तेमाल होता है। GABA is also a very important non-protein amino acid which is used as a neurotransmitter. So dear students, if you like this video, I request you to please subscribe this channel, hit the bell icon button, like the video and share